Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to another live session of GETI Talks. My name is Shilpi, and I'm the Relationship Manager with the Global Education and Training Institute. Well, I have a very special guest today, and you know what? When you start wishing New Year, you always wish our neighbors first. So that is the tradition I'm carrying out today. और आज हम ये शो बायलिंगुअल करेंगे क्योंकि हम अपनी पड़ोसी देश से एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को लेकर आए हैं, मिस हिना अदीब, and she is the assistant professor with the Faculty of Media and Communication in Central Punjab, and she's also the head of the FM 92.6 in Pakistan. So मैम खैर मकसद में आपका इस शो में और हमारी उर्दू के लिए हमें थोड़ा माफ कीजिएगा, बट मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए उर्दू बोल रही हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू लखनऊ और हमारे लिए लाहौर बहुत ज्यादा दूर नहीं है. आपका अनारकली बाजार इज एट अमीनाबाद और आपके कराची के हलवे हमारे वहां बनते हैं और आपके फवाद खान, आपके कशफ और जारून हमारे आम जिंदगी के एकदम हिस्सा बन चुके हैं. सो हम बात भी आज उसी पे करेंगे, ड्रामा एंड आर्ट, हाउ यू नो दिस कैन इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स and also how do they can be used for the betterment of society. So मैम पहले तो आप थोड़ा सा अपनी आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए लोगों को कि आप, वैसे तो मैंने बहुत छोटा सा दिया है, कहने को बहुत कुछ है. So I would like you to introduce yourself to the audience first in Lucknow and abroad also who are watching us, and then we'll talk about this topic. Exactly. Thank you so much, Shilpi. First of all, thank you. It's an honor to be part of this prestigious GETI talk as well. And if we, before we lead towards the, formal session of specifically related to the art and drama and performing arts, I would like to say hello to everyone out there and a very happy new year to everyone out there, specifically the audiences who are watching us in India and all abroad and in the different regions of the world as well. आप सभी लोगों को बहुत प्यार भरा सलाम और नमस्ते भी मेरी जानिब से भी, और definitely thank you so much for this warm welcome as well. बहुत मुझे अच्छा लगा, और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, I would like to appreciate your communication skills. Definitely you've been so proactive, और मेरे साथ जिस तरह से आपकी जो है वो गुफ्तगू रही इतने अरसे से, तकरीबन पिछले 15-20 दिन से हम लोग जो है वो कांटेक्ट में हैं, और आप जिस तरह से मुझसे जो है वो बात कर रहे हैं, you're so proactive regarding the post and regarding the postures and everything that can be beneficial for this session as well. So I would like to say thanks to the management and to you as well for being so proactive, and your communication skills are too good. और लखनऊ जो है वो उससे हमारी बहुत रग़बत हमेशा से रही है. लखनऊ की उर्दू के हवाले से तो पूरी दुनिया में धूम मची रहती है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने अनारकली बाजार का जिक्र किया, आपने फवाद का जिक्र किया, आपने कराची का जिक्र किया. I consider myself so blessed कि मुझे भी जो है मौका मिला हिंदुस्तान आने का, मुझे मौका मिला इंडिया घूमने का, दिल्ली देखने का, नोएडा देखने का, गाजियाबाद देखने का. आपका केरल बाग इज जस्ट लाइक अनारकली बाजार. सो मुझे वहां जाके फील ही नहीं हुआ कि मैं जो है वो इस वक्त इंडिया में हूँ और लाहौर पाकिस्तान में नहीं हूँ. बस ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो एक सोशल हार्मनी है बिटवीन यू एंड बिटवीन मी एंड बिटवीन बोथ नेशंस, आई विश एंड आई प्रे कि ये बहुत पॉजिटिव रहे, और हम इसी तरह से एक दूसरे के साथ जो है वो मिलते भी रहें, बात भी करते रहें, और इस तरह के बहुत सारे सेशंस जो है वो हम कंडक्ट करते रहें. So I think if there is a communication barrier right now, can you hear me, Shilpi ji? अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं, और शिल्पी जी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से कि हाउ कैन वी एनहांस द कम्युनिकेशन स्किल्स, specifically when it comes to the performing arts and when it comes to the drama as well. Shilpi ji, are you with me? I think there is some internet issue that she's facing right now, but I can, keep on talking about that's what an RJ has to do. Or specifically, जब हम
रेडियो की फील्ड की बात करते हैं तो हमें कम्युनिकेशन जो है वो उसमें कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है. So when it comes to communication, then you need to be confident enough. And how can you enhance your skills? If we talk about this specific question, then what comes first is your confidence level. That you need to boost your confidence level. You need to develop your confidence level on whatever platform you're talking, on whatever platform you're presenting, whatever you're presenting, you need to be confident enough. Now, Shilpi is back. Shilpi, can you hear me now? Yes, yes, sorry. It's okay. It's a part of the game. You know, the internet used to do this with a lot of people, and specifically when we are teaching online. So we have a lot of hurdles with internet. Yeah. So actually wanted to ask you regarding drama and art. So people who are shy, usually I have seen actors, जब उनके साथ कभी उनका इंटरव्यू देखते हैं या ऐसे बात भी होती है, सो जैसे कि हम तो बड़े शर्मीले थे, हम तो क्लास के पीछे बैठने वाले थे. फिर ऐसे ही लोग ज्यादातर एक्टर्स कैसे बनते हैं? क्या एक स्पेशल स्किल्स होती है? क्या आप बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं? जब आप बहुत संजीदा होते हैं, आप शाय होते हैं, तो शायद आप लोगों को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं. आप अपने आप में उतना नहीं खोए रहते हैं जितना आप लोगों को देखने में लगाते हैं. So, what are the skills that can make you a good actor? First of all, Definitely, I was talking about communication skills, and let me tell you कि जो लोग shy हैं, specifically when it comes to the acting field, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि वो इतने ज़्यादा extrovert नहीं रहे, लेकिन they are very good actors now. They're performing really, really good in their respective fields as well. So, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको adopt करके you can be a part of that field as well. You can be part of that game as well. Confidence तो definitely with the passage of time ही आता है. और confidence के साथ साथ जो चीजें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं, वो आपकी डिलीवरी है. आप किस तरह से लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं. आप कितने अच्छे जो हैं, आप कह लीजिए कि आपका चैनल कितना, आपका सोर्स कितना स्ट्रांग है, दैट यू नो that you can communicate to the people in a way that they can understand. वो being receivers आपको किस तरह से लेते हैं, ये बहुत मैटर करता है. I still remember I was watching an interview of late Om Puri ji, और उनके साथ नसीरुद्दीन शाह साहब का एक इंटरव्यू में देख रही थी, and they were talking about their struggle और कहाँ से उन्होंने मुंबई स्कूल ऑफ ड्रामेटिक्स से जब उन्होंने आगाज किया, and he was quite shy, he was very introvert kind of a person. He even cannot communicate in Hindi language. और हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ वो अंग्रेजी में उनको बहुत प्रॉब्लम होता था. वो कहते थे कि मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाता, मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ. सो ही ओवरकम दैट इशू एंड दैट प्रॉब्लम, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वही ओमपुरी साहब की अगर हम एग्जांपल लें तो उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म्स में काम किया हुआ है. सो इफ यू हैव दैट urge to move on, I think you can overcome any of this situation that can be a part of hurdle जो बन सकती है आपकी लाइफ में आपको आगे जाने से जो चीज रोक रही है. अगर आप अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं, आपको अपने ऊपर इतना बिलीव है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे एक्टर जरूर बन सकते हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, एक अच्छे आरजे बन सकते हैं, एक अच्छा एंकर बन सकते हैं. तो आपसे मैं इसके बारे में और भी पूछना चाहूंगी कि फॉर अ स्टूडेंट how much important is it for them to build this communication skill? Why? Because I believe आपके दिमाग में कितना भी नॉलेज हो, आप कितना भी इल्म रखें अपने पास, लेकिन अगर आप उस चीज को अल्फाजों में नहीं समझा पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे हैं, तो उतना नॉलेज लेके आप करेंगे क्या? सो ईदर वर्बल और being able to speak it out is very important. So communication skills for students, how is it and where all can, why is it required for them, and at what stages of life do they require it? When it comes to university students or when it comes to college students, definitely they have to be confident enough to communicate with their teachers. And on the other side, I think that teachers can also play a very vital role, in and in boosting confidence in their students as well. So what I do with my student is that I, give them chance to come to the other part of this podium.
when you're sitting in a classroom, and then definitely आपको एक चीज होती है कि आप अपने टीचर के साथ communicate तो कर रहे हैं, but when teacher calls you out and then he or she gives you the opportunity to stand on the podium and then communicate to the rest of the class, then definitely your confidence level boosts up. और वो आपको एक बड़ा अच्छा मौका देते हैं कि आप लोगों से बात कर सकें, आप उन तक अपनी बात को पहुंचा सकें, by when students are presenting their presentations, तो उसमें उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा जो है वो उभर कर सामने आती हैं। आप उनको सिखाते हैं कि अगर अभी जैसे मैं अपनी फील्ड की बात करूं, कम्युनिकेशन की बात करूं, मास कम्युनिकेशन की बात करूं, तो मेरी फील्ड में एक चीज बहुत मैटर करती है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से उनको डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो सिखाने हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि इंटरव्यू स्किल्स की मैं बात करूँ, कि अगर मैं उनको बताती हूँ कि अगर आपके पास कोई आया है तो उसको कैसे इंटरव्यू करना है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका पोस्टर कैसा होना चाहिए, लाइकेबिलिटी करती है। और बेशक आपको वो शख्स अच्छा लगे ना लगे, बट यू नीड टू गिव द लाइकेबिलिटी, यू नीड टू गिव द वी फीलिंग टू द अदर पर्सन दैट एग्जैक्टली आप मेरे पास आए हो, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हो और मैं आपसे वैसे ही क्वेश्चन करूंगी या करूंगा। सो ये बहुत सारी चीजें आपकी मैटर कर रही होती है। स्टूडेंट्स के लेवल पर जाकर आपको सोचना पड़ता है कि जहां उनका कंफर्ट लेवल है, आप वहां जाकर उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करते हैं। और ये मैटर इट ऑल्सो मैटर्स, इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम लेवल टू लेवल। स्कूल के जो स्कूल्स के जो हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए एक अपना तरीकाकार है, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए अपना है और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए अपना है। अब तो अगर हम ये बात करें, थिंग्स आर नाउ ऑनलाइन और अब पैराडाइम शिफ्ट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पैराडाइम शिफ्ट है। इसमें भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करने पड़ते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। और उसमें भी आप अपने स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें तो मजीद बेहतरी जो है वो इसमें आ सकती है। सो मल्टीपल वेज, बहुत सारे तरीकाकार हैं जिनसे आप अपने स्टूडेंट्स को जो है उनका मोराल को, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। So for students जिनका communication skills are not very strong, and they want to improve upon it, so what are the ways you're going to suggest them? What I do with my students, मैं उनके साथ एक ट्रस्ट का जो एक एलिमेंट बहुत मैटर करता है। मैं उनको एक प्रैक्टिस देती हूँ। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनकी एक ही ख्वाहिश होती है, एक ही अर्ज होती है, मैम वी वांट टू बिकम अ रेडियो जोकी, वी वांट टू बिकम अ न्यूज कास्टर, वी वांट टू बिकम न्यूज एंकर। सो हाउ कैन वी डू दैट? हम कैसे कर सकते हैं? हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें डर लगता है, वी आर कैमरा शाय पर्सन्स, we do not know how to read the news on a teleprompter. So ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं? So I always tell them, kindly start reading first of all. जब तक आपका मुताला अच्छा नहीं होगा, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, you cannot deliver good. सेकेंडली ये है कि मैं उनको एक एक्सरसाइज बताती हूँ कि काइंडली आप बेशक एक पीस ऑफ पेपर पकड़ लीजिए, कोई स्टोरी बुक पकड़ लीजिए, कोई न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, और उस न्यूज़पेपर को आप पकड़कर थोड़ी देर के लिए दिन में, आप बहुत ज्यादा टाइम ना, आप 10 मिनट जो है वो निकालिए और 10 मिनट्स में आप सिर्फ और सिर्फ आईने के सामने खड़े रहकर आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको पढ़िए, आईने के सामने खड़े होकर पढ़िए। आपको ना सिर्फ आपकी डिलीवरी में परफॉर्मेंस में बेहतरी नजर आएगी, आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन में बेहतरी नजर आएगी, आपको अपने जेस्चर्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज में बेहतरी नजर आएगी। जस्ट स्टार्ट डूइंग दीज स्मॉल एक्सरसाइजेस by standing in front of the mirror and then start reading the newspaper or the storybook or anything that is in your hand, then definitely you can enhance your communication skills. Yes. So जैसे हम पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं, we are like हम बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास, like we have grown up on धूप किनारे, we have grown up on Omar Sharif, बकरा किश्तों में है, एंड आपके रिसेंट जिंदगी गुजार है, लॉकडाउन में लोगों ने उसके एपिसोड कई बार देखे। सो coming to the question ki real life characters ko to drama, when you imitate them and we also relate to them, so do you think drama and art are an imitation of life? Shilpi ji, I cannot, sorry for the interruption, but I cannot listen you clearly. आपकी आवाज में थोड़ी सी जो है वो मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, can you listen to me now?
Can you listen to me now? I think there's a network issue. All right, so I was going on with Hina that she is the professor, assistant professor of media and communication with the University of Central Punjab. So she has been teaching her students about drama and art, and she has been improving upon their personalities. And they have, she's been training even the specially aided children into this so that they are able to communicate properly. And this is, she's also one of our Ed leadership keynote speakers, and she will be addressing the entire audience in the Ed leadership. So she's our special guest today, but just like the internet is playing up a lot today, we'll wait for Hina to join again. So coming, till the time she's joining, communication का एक बहुत अहम पहलू होता है your language, and that is what she was emphasizing. What कि any language that you need to, if you want your vocabulary to be good and you want, for communication, you need to have a good vocabulary. आपके पास लफ्जों का शब्दों का बहुत बड़ा भंडार होना चाहिए so that you don't run short of it when you're talking, क्योंकि कई बार हमें एक्सटेम्पर तरीके से बात करनी पड़ती है, हमेशा आपके पास एक रिटन स्क्रिप्ट नहीं होती. सो देयरफॉर उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, स्पेशली आपको अगर आप प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, आप कम्युनिकेशन में आगे जाना चाहते हैं, जैसे वो बात कर रही थी न्यूज कास्टर या आरजे. सो वो जैसे ये समझा रही थी, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम रीडिंग स्किल्स को बहुत डेवलप करें, और वी शुड नॉट स्टिक टू सम पर्टिकुलर जॉनर ऑफ बुक्स. We should read whatever comes our way, and that is the first step to becoming, to gaining confidence in communication. You should have a lot of interest in people, in observing them, listening to them, cultures, watching plays, movies, reading books from different writers from different countries. That actually develops your communication skills. अगर आप अपने आप को बांध लेते हैं कि नहीं हम सिर्फ इंग्लिश की बुक्स पढ़ेंगे और हम सिर्फ थ्रिलर्स पढ़ेंगे, हम सिर्फ सस्पेंस पढ़ेंगे, तो फिर that will not lead to a lot of enhancement in your communication skills. एंड हम यही गुफ्तगू कर रहे थे हिना जी के साथ. हमारे मजमून जो था आज का, जो है रादर बात करने का, वो यही है. आई थिंक शी इज देयर. थोड़ा सा उनका इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है, एंड जस्ट टू इन्फॉर्म द ऑडियंस, there is a problem at her place also. So but she has been very kind enough to join us today. So therefore, yes. So communication के लिए you have to read. जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम बाइलिंगुअल कर रहे हैं, हम हिंदी में भी कर रहे हैं, हम उर्दू में भी कर रहे हैं, हम इंग्लिश में भी कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट दिस टू बी, एज हिना जी सेड, शी विशेस दैट कि लोग पाकिस्तान में भी इसे देखें, और हम भी चाहते हैं कि भारत में लोग इस एपिसोड को देखें. सो वी कैन नॉट बी प्योरली इन इंग्लिश, वी कैन नॉट बी प्योरली इन उर्दू, एंड वी कैन नॉट बी प्योरली इन हिंदी. तो इस चीज के लिए हम दोनों का लैंग्वेज के अंदर स्किल्स होना बहुत जरूरी था. So therefore, I think because I'm interested in a lot of culture and people, so it was easy for me to get into Urdu and for her to get into Hindi. So we'll just wait for 2 minutes. I think she has to join us. कुछ तो हो रहा है आज जो गड़बड़ है. I want the audience to paste the questions here if you have any. Thank God we are back. कोई बात नहीं, हमने वो पूरा I was able to cover it up with you. Okay. Ji, now you can ask the question. Yeah, so I was asking you कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हम इंडियंस हैं, हम अपने सीरियल्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज हमारी जो कैरेक्टर्स होती हैं वो गहने पहन के सो जाती हैं. बट हम पाकिस्तानी ड्रामास को बहुत पसंद करते हैं बिकॉज कशफ हो, चाहे आप के सीरियल उमर शरीफ के सीरियल्स हो, उनमें कैरेक्टर्स बड़े रियल लाइफ होते हैं. इट्स लाइक इमिटेशन ऑफ लाइफ. सो कैरेक्टर्स, आर्ट एंड ड्रामा, how do they relate? Can you just elaborate on it?
कि हाउ डू दे रिफ्लेक्ट अपॉन सोसाइटी, जो हमारे टॉपिक में भी है कि दे रिफ्लेक्ट अपॉन सोसाइटी एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. Exactly, exactly. Dramas, it is an amalgamation of emotions. It is the amalgamation of excitements, different kind of experiences that we can relate with. और ड्रामा जो है जब हम उसकी बात करते हैं तो वो इमिटेट करता है आपकी लाइफ को, आपकी सोसाइटी को. इट इज द मिरर ऑफ योर सोसाइटी, एंड इफ वी कैन रिलेट विद इट, we can take examples of different things like आप अपनी सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, आप उसको ड्रामे की सूरत में लोगों तक पहुंचा सकते हैं. It has a great significance. It diverges the events in the society. It aids the people to have a better understanding of their society. So आप उनको बता सकते हैं कि आपकी सोसाइटी में जो है वो कौन कौन से इश्यूज हैं, किनको रेज करना चाहिए. जैसे we can talk about the child labor, we can talk about women education, we can take the हाँ. examples of kidnapping, we can take the examples of bribery, the political thuggery, the economic hardships. So we can definitely relate with all the dramas जो कि आप different उसको modes पर बना रहे होते हैं. और पाकिस्तानी ड्रामास की अगर मैं बात करूंगी तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे राइटर्स जो है उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है. बानो कुर्सिया हमारी बहुत जो है वो बेहतरीन काम करती रही. फिर उनके अलावा हमारे अनवर साहब जो है वो बहुत कमाल राइटर रहे. फिर उसके साथ साथ उमर अहमद है जिनका आप ये ड्रामा भी जो है वो आप जिन ड्रामा की अपडेट कर रहे हैं. सो हम कोशिश करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा के प्लॉट को डिफाइन करते हुए और की स्टोरीज को बनाते हुए वो चीजें उठाएं जो वाकई सोसाइटी में एग्जिस्ट भी करती हैं और जो लार्जर नंबर ऑफ पीपल को इफेक्ट भी करती हैं. पाकिस्तान में हमने कोशिश यही की है. ड्रामा मीन्स, अगर मैं ड्रामा की बात करूँ तो वो ये है कि ये फिक्शन है और फिक्शन पर बेस्ड आपकी परफॉर्मेंस तो है ही है अगर मैं उसकी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ. लेकिन फिक्शन के साथ साथ रियलिटी कितनी आप जोड़ते हैं उसमें और आप अपने लोगों को किस तरह से फील कराते हैं कि यस एग्जैक्टली इट इज अबाउट यू, ये बहुत मैटर करता है ड्रामा में. सो पाकिस्तान में हम लोग कोशिश तो यही कर रहे हैं और हमारे राइटर्स भी और एक्टर्स भी कि जितना आपको रियलिटी से करीब तर दिखाया जा सके उतना ही दिखाएं. और हम लोग अक्सर जो है वो इस बात पर बड़ी चर्चा भी किया करते थे और बड़ा फैसिनेट भी हुआ करते थे कहीं ना कहीं. और स्पेसिफिकली अगर मैं पाकिस्तानी औरतों की बात करूं कि कहानी घर घर की अगर हम एग्जाम्पल लें या सास भी कभी बहू की अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम बड़े हैरान रहते थे कि अच्छा मतलब रसोई में भी साड़ी और इतना जो है वो मेकअप और इतनी ज्वेलरी के साथ कैसे खाना पकाया जा सकता है. वी ऑलवेज हैव दैट थिंग इन अ माइंड कि अच्छा ऐसा ही शायद होता होगा वहां पे मे बी. बट व्हेन आई विजिटेड इंडिया तो देन आई गॉट टू नो कि नहीं नहीं इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट, ऐसा नहीं होता. वहां पर भी हम ही जैसे लोग हैं, वहां पर भी हमारे जैसे ही कपड़े पहने जाते हैं इन रियल लाइफ. तो ये डेफिनेटली बहुत मैटर करता है एक प्रोड्यूसर पर, एक डायरेक्टर पर और एक स्टोरी टेलर पर कि वो किस तरह से आपके ड्रामे की डिपिक्शन करता है और किस तरह से लोगों तक उसको रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने की कोशिश करता है. आई डू बिलीव कि समटाइम्स हम शायद ऐसी चीजें इसलिए दिखाते थे बिकॉज शायद हम ना कभी कभी आपको एक एस्केप मोड देते हैं कि हाँ ऐसी भी जिंदगी हो सकती है, दिस इज व्हाट यू वांट टू लिव लाइफ. सो कमिंग टू बैक टू एजुकेशन, आई नो यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. एक स्टूडेंट के लिए, फॉर एवरी स्टूडेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, डोंट यू थिंक इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट दे शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस ड्रामा एंड आर्ट, बिकॉज ये शायद आपकी ना एक पर्सनालिटी को ग्रूम करता है, बहुत जरूरी होता है. एंड कैथारसिस, आई थिंक कैथारसिस का भी काम करता है कभी कभी. सो वुड यू लाइक टू एलैबोरेट ऑन दैट? Yes, exactly. I do believe in it. मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए it is one of the integral parts to be part of performing arts. Whether they join mime, whether they join the forest, whether they join the drama or the dance or photography or whatever they want to get into it, or the maybe the paintings and the sculpture and the art of fine arts and things like that. It is the part of their self grooming. ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए
कि वो अपनी करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ दे कैन बी पार्ट ऑफ देयर को करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल एंड दे शुड बी पार्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को एक मजीद बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनाने के लिए आपको इसका हिस्सा होना बहुत जरूरी है। इफ यू गुड सिंगर, आपका कैथारसिस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कैथारसिस होता है व्हेन आई कंडक्ट माय रेडियो प्रोग्राम्स। वो मेरा कैथारसिस है कि जब मैं 2 घंटे निकालती हूँ अपने 24 घंटे की बड़ी सख्त रूटीन में से, एंड आई conducted my program on radio, and thousands of millions of people are listening to you, they're watching you on Facebook, and they're interacting with you, and they're giving you the feedback. It is your catharsis. वो आपको एक बड़ी अच्छी फील जो है वो देता है। और ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मैं अपने स्टूडेंट्स, आई एम अ पेट्रन परफॉर्मिंग आर्ट्स एज वेल, सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ 7 to 8 domains in my university, which is started from drama to performing arts to dance, to photography, to the students who are related to the artistry and the art of sculpturing and the art of painting and drawing and sketching, and then to the students who are specifically related to the media as well. We have a media club, and we have different activities that definitely relates to the documentary making and filmmaking and all that stuff, which is very very important for the students of media. So ये उन सब बच्चों को मैं यही पैगाम देती हूँ और यही उन तक मैसेज पहुंचाती हूँ कि once in a life kindly be part of performing arts as well. ये आपके लिए और आपके आने वाले कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप एकेडमिक नॉलेज लें, आप बुकिश नॉलेज लें और आप यहाँ से चले जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स आपकी रूह की ताजगी का एक सफर तय करने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। वो आपकी अपनी सोल की जो है एक पॉजिटिविटी में आपका बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। सो स्टूडेंट्स को जरूर करना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये जो आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल के स्टेज हैं, ये आपको आने वाले जिंदगी के स्टेजेस का एक पहली सीढ़ी चढ़ना सिखाते हैं। सो मुझे लगता है कि अगर आप इफ यू कैन फेस 700 to 1000 people in your auditorium, then you can face the society easily. तो आपको जरूर जो है स्टेज पर आना चाहिए, और वो किसी भी तरह का स्टेज हो, आई थिंक आपको उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। चीज जो हम पूछना चाहेंगे, आई वुड लाइक माय ऑडियंस टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, is communication always, as it is misunderstood, is it always verbal? How many types of communication are there? Because as a layman, if I tell them they wouldn't accept it, but if it comes from you as a professor, they might get it clear. So is only speaking a part of communication, or there are different ways of it? No, मुझे ऐसा लगता है कि when we talk about verbal communication, then it definitely is, it's about language. It's about whether it's written or it's spoken. Verbal communication, refers to both things, written or spoken. But when it comes to the non-verbal communication, then it refers to the body language. Then it refers to your gestures. Then it refers to your body postures as well. So communication की सिर्फ जो है वो एक ही टाइप नहीं है, उसमें तो definitely जब हम बात करते हैं communication की, if we get into the roots of this word communication, and if I talk about the communication in Latin word, then it came from the word communicare, that means to share, that means to make things common. And definitely when you share your things, your message with other people, and then definitely you lead towards the social harmony, and you can bring change to the society, you can bring peace to the society. और फिर मुझे लगता है कि communication का एक मतलब जो है वो understanding भी है। Communication जो है वो it's like how you perceive things, it's like that how you interpret, it's like it how you can relate to the perception and interpretation of what we actually know. So understanding, sharing और लोगों से बात करना, चीजों को आपस में जो है वो हार्मोनाइज करना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत मैटर करती हैं कम्युनिकेशन के हवाले से। और अगर मैं बात करूँ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू में, तो हम चूंकि मास कम्युनिकेशन के लोग हैं, हम मीडिया से रिलेटेड हैं, तो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, इफ आई यूज द वर्ड बाइक फॉर एग्जांपल, so bike refers to the bicycle as well, and bike refers to the motorcycle as well.
सो ये बड़ा मैटर करता है, द कॉन्टेक्स्ट, द वर्ड, आप जिस वर्ड के जिस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिस्कवर करता है कि उस वर्ड का शेयर्ड मीनिंग क्या है। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली कम्युनिकेशन में मैटर कर रही होती है। और अगर मैं कम्युनिकेशन मॉडल की बात करूं, तो उसमें हम लोग अक्सर जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना, वो सोर्स से स्टार्ट करते हैं। आपका सोर्स क्या है, आपका मैसेज क्या है, आपका चैनल क्या है, आपका रिसीवर कौन है, आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, आपने उसमें स्पेसिफिकली अगर आपने इन्वायरमेंट का बहुत ख्याल रखना है, आपका एम्बियंस बहुत मैटर करता है, आपका जो है उसमें इंटरफेरेंस भी बड़ी मैटर कर रही होती है। कि कम्युनिकेशन में अगर हम बैरियर की बात करें, तो कम्युनिकेशन बैरियर जब आ जाएगा तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहती है। तो टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस को हमेशा इफेक्टिव बनाने के लिए एम्बियंस और एनवायरनमेंट जो है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। So, there are different multiple ways that you can disseminate your message, that you can disseminate your information and your point of view to rest of the world. थैंक यू सो मच हिना जी, कि मुझे पता है आपने बहुत मुश्किल से वक्त निकाला है, एंड यू नो शुक्रिया बहुत बहुत कि आप आए। और जाते जाते मुझे वो शेर याद आ रहा है, मतलब मुझे लगता है कि वो ना पहली बार जब मैंने उर्दू की किताबें पढ़ना शुरू की थी, नॉवेल्स पढ़ना शुरू किया, तो मेरी पहली नॉवल थी रुस्वा जी की उमराव जान। मैंने पिक्चर अच्छा। देखी थी और उसके बाद मुझे बड़ा वो हुआ क्यूरियोसिटी कि एक्चुअली उमराव जान वाज फ्रॉम लखनऊ। मुझे लगता था कि ये वाकई में है, एंड आई वाज सो फैसिनेटेड। एंड तब मैंने वो किताब पढ़ी, एंड उसके बाद से मुझे इंटरेस्ट आने लगा उर्दू में, एंड देन आई रियलाइज कि तो हमारी भाषा है, ये हमारी जुबान है, एंड आई एम वेरी लकी टू बी बोर्न इन लखनऊ एंड रेज्ड हियर। तो जाते जाते मैं वही बोलूंगी, इट्स अ कश्मीरी लैंग्वेज, बट इट्स ऐसी खुशबू है ये। घर फिरदौस बरुए जमीयत, घर फिरदौस बरुए जमीयत, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। If there was heaven on earth anywhere, it's here, it's here, it's here. तो आशा करती हूँ और पूरी उम्मीद है कि हम लाहौर जरूर आएंगे और आप लखनऊ जरूर आए, हमारी तो Inshallah. मुलाकात थैंक यू Inshallah. सो Thank मच। you so much for giving me this opportunity. It was lovely having you. Thank you so much for all the audiences, to all the audiences as well. And inshallah, मेरी दुआ है कि ये जो एक तरह से आप कह लीजिए फासले हैं, ये जरूर खत्म होंगे और हम इंशाल्लाह सरहद पार जरूर आएंगे। और आपको लाहौर के लिए हमेशा दावत है, जब आपका दिल करे यू कैन बी डेफिनेटली माय गेस्ट। और हमारे लिए जो है वो बड़े एजाज की बात होगी कि हम बाहें पसार के आपका स्वागत करें। Thank you so बिल्कुल। much. It's lovely having you. Thank you.